Hi everyone, welcome back to Super Kalam. I am your teacher Arpita Sharma and we are back with the weekly news analysis everyone. As you all know that every Sunday we analyze the most important articles from the Hindu newspaper, right? Not just the Hindu but also the Indian Express newspaper. Now first of all, here's a small tip for all of you. Whenever you are following current affairs, instead of just going through directly the magazines, what you can do is start reading the newspaper as well. I am not saying start making notes from the newspaper, but at least start reading them. You can either start with the Hindu newspaper or you can start with the Indian Express newspaper, whichever suits you and your understanding, because hota kya hai ki some students they find the vocabulary of Hindu newspaper a little bit tough, and some people are very comfortable with Indian Express. It depends, but choose either of them, either one of them. Okay. Now another important step is, when you read these newspapers, read from an analytical mindset. That means first read what the problem is which has been highlighted in the article, and then understand what can be the solution. If the solution is not given, then rather brainstorm or find out the solution, analyze the solution, introspect what, as a DM, as an IAS or IPS or IFS officer, you can suggest, okay, to solve that particular issue. If you understand one aspect of newspaper reading, it is preparing you directly for mains. Yes, because in mains you identify the problem and you then give your suggestion. Same thing has to be done whenever you will be posted. You will be given the problem and you will be have you will be giving the suggestion or recommendation. That would be your role, that would be your duty, and then you would be implementing them. So this weekly news analysis that we are conducting every Sunday, it is for you to understand the problem statement and then identify the suggestion or the solution. Okay, so this is going to be a very fruitful activity. I hope that you guys are maintaining a register for every Sunday's weekly news analysis. 9 से 13 सितंबर के important articles आज हम revise करने वाले हैं. Now let's get started. The first very important article in the Hindu newspaper, in the Indian Express, this article came, by the way. Article is building on success. Swachh Bharat mission shows what is possible by sustained intervention and schemes going beyond their initial targets. Now, this is very important. See, whenever you are implementing a plan, Swachh Bharat mission आपने plan implement किया. If you are limiting yourself or your thought process till the target's achievement only, then you are committing a big mistake. अगर आप किसी, नॉट जस्ट दिस मिशन, इफ इवन इफ you're working in a company and you are limiting your innovation, your ideas to fulfilling only the targets, monthly targets or yearly targets or weekly targets, then you are limiting yourself and your potential. You have to think beyond the targets. तो let us first understand कि what is this स्वच्छ भारत मिशन. अब आपको पता है कि हमको किस एस्पेक्ट में सोचना है. सी हाउ ब्यूटिफुली वी हैव क्रिएटेड दीज माइंड मैप्स एंड दीज फ्लो चार्ट्स फॉर यू, so that you can understand how to extract the important inputs from the article. Aspect पहला आप देखोगे, स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन मेंशनड. सो व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? देन उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ मीन्स क्लेanliness. So to achieve universal sanitation and cleanliness by eliminating open defecation, waste management, etc. That is the objective. Then after the objective, you need to understand what are the components through which you have to fulfill these objectives. तो क्या components हैं? We have construction of toilets, behavioral change campaigns. That means public awareness, because लोग तो गाँव में खुले में शौच करने जाते हैं, उसको change करना है mindset को. Because many people they think that having a toilet or bathroom at home is not good for according to vastu or this and that, है ना? Then solid waste management, कि even solid waste management, how to dispose of the waste. So these are the components. If they are successfully fulfilled, the objective would be completed, it would be achieved. And then the key achievement of this mission: construction of million of toilets have been done. There has been a reduction in open defecation, sanitation coverage bhi increase hua hai. These are the key achievements under this mission that we have been able to achieve. Now another important point is कि this particular article in the Indian Express newspaper pertains to which paper. So I have told you a lot of times कि when you are reading the newspaper, current affairs जब भी आप पढ़ रहे हो, you have to link it with your GS.
लिंक इट विद योर जीएस। तो यहाँ पर यू शुड हैव योर सिलेबस विद यू। अगर आपके पास सिलेबस है, इंटरलिंकेज बिकम्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर आर्टिकल फॉल्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। सोसाइटी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, सोसाइटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड गवर्नेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, सोशल गवर्नेंस भी इसके अंदर एक टॉपिक हो सकता है। यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया। ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Now the next article is really important from two perspective. Mains में it is important from GS paper 2's perspective and it is important from the perspective of prelims, जिसके अंदर they can ask you about the boundaries. What boundaries? Because we are showing you the map of Persian Gulf over here. तो यहाँ पर which nations cover, they share the boundary with Persian Gulf on the east side, on the west side, on the north side, on the south side. This becomes relevant. So why this is in news? Why this Persian Gulf map I have shared? Because there was a recent visit by the Crown Prince of Abu Dhabi, and that is why it was in news. India and UAE have signed a pact for civil nuclear cooperation. तो यहाँ पर ये बहुत important aspect है. For which GS paper? जल्दी से बताओ. Yes, it is for the perspective of GS paper 2, international relations. बहुत ही important aspect है. If you have PSIR as your optional, these kind of articles are important. Please make notes out of them. Now let us understand it. India and UAE have signed a memorandum of understanding for the civil nuclear cooperation. Now this cooperation involves deals on the basis of Nuclear Power Corporation of India Limited, that is your NPCIL, and the Emirates Nuclear Energy Company. These are the two companies which are involved. ये इंडिया की तरफ से है, it is from India side and this is from UAE side. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. वाई? फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट. सो आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी. वी हैव द बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट. इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया एंड यूएई आर कमिंग टुगेदर. Okay, this is first aspect that you have to extract out of the newspaper. Now the second important aspect, when we talk about this nuclear power plant, where is it situated? It is situated in, write it down, Al Dhafra, okay, which is in the Emirate of Abu Dhabi in UAE. And do you know that this nuclear power plant, I'll erase this, I hope आपने ये लिख लिया होगा. This nuclear power plant, it is, write it down, Arab's first nuclear power plant. So this is going to be extremely important. This MOU was signed for long-term liquefied natural gas supply between UAE and India. So again, another important aspect, long-term liquefied natural gas supply between UAE and India. तो इसीलिए भी important हो जाता है. And it was signed with the India Strategic Petroleum Reserve Limited for the supply of petroleum. Okay, तो ये भी important है. Another MOU was signed between India and UAE and it was for food parks. Okay, food park development in India. और यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर किया जाएगा फॉर द फूड पार्क डेवलपमेंट. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू एक्सट्रैक्ट. अब यहाँ पर आप देखोगे पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब भी पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करते हैं, पर्शियन गल्फ बिकम्स क्रूशियल. ओके, चलो. एंड डू यू नो दैट देयर इज अ डिफेंस कोऑपरेशन एक्सरसाइज ऑल्सो बिटवीन इंडिया यूएई विच इज नोन एज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन. So this is also important from the perspective of prelims. I will be sharing the notes with all of you. In the notes, everything relevant for pre and mains has been covered. Okay. Now coming on to the next important article. Prime Minister Modi convenes means calls first meeting of National Research Fund Board. Now अब ये बहुत important हो जाता है. When we talk about the National Research Fund Board, तो ये important क्यों है? From the perspective of, if we talk about prelims, it is very very important because questions on these boards have been asked a lot. काफी बार ऐसे boards के ऊपर question आते हैं. So in the budget also it was mentioned 50,000 crore National Research Foundation Fund, it was established.
it was established, ठीक है, when in 2021. Why? To promote the interdisciplinary research on different subjects. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड, इट इज द गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. It has been established with the from the perspective of or with the help of the Anusandhan National Research Foundation Act of 2023. सो ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इस एक्ट के बारे में. ठीक है, चलो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, अब मैंने आपको बताया इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विल बी डन. व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड एक्सपेंशन, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च होगी. दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस अंडर दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन. ओके, now coming to the next important aspect, I remember I asked students on Telegram also to study this article. GOM to decide on tax on health life covers soon. अब लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ कवर्स आप लेते हो ना, हेल्थ कवर्स लेते हो, अब उस पे भी टैक्स की बात हो रही है. राइट नाउ they are not saying that they will be charging tax right away, but yes, they are going to decide. अब देखो नॉर्मल जीएसटी पेमेंट अगर आप देखोगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल जीएसटी पेमेंट? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन द गवर्नमेंट. तो यहाँ से गवर्नमेंट टैक्स लेती है और इनका टैक्स यहाँ से रिसीवर से निकल जाता है, तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे देते हैं कुछ हिस्सा उसका. नाउ जीएसटी पेमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, हाउ इट हैपेंस? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, they receive payment from the receiver of goods and services because they are getting the goods and services, and the receiver of goods and services will give the GST to the government. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रिवर्स चार्ज. अब यहाँ पर मैं आपको और समझाती हूँ डायरेक्टली. ऊपर वाले प्रोसेस में आप देखोगे जीएसटी पेमेंट के साथ साथ, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट के साथ साथ जीएसटी इंक्लूड करके यहाँ पर दिया जा रहा था, एंड दैट जीएसटी वाज बीइंग पेड. यहाँ पर डायरेक्टली रिसीवर ही डायरेक्टली जीएसटी पे कर देगा. उस केस में हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज. तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज दैट द जीएसटी रेट ऑन कैंसर ड्रग्स हैव बीन रिड्यूस्ड. Reverse charge mechanism will be introduced on supply of metal, and the GOM, which is the group of ministers, they are going to study compensation cess and GST on insurance now. इंश्योरेंस के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस को पढ़ा जाएगा. ओके, B2C का ई इनवॉइसिंग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, अब यहाँ पर आपको जीएसटी काउंसिल पढ़ना जरूरी है. दे विल नॉट डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज इन डिस्कशन राइट नाउ, बट जीएसटी काउंसिल इज इंपॉर्टेंट. व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज इट? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अंडर विच आर्टिकल इट इज इनैक्टेड? आर्टिकल 279A सबसेक्शन 1 ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016. हु आर द मेंबर्स? ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. So this was our weekly news analysis for today. I hope these analysis classes are helping you out in making more refined notes and extraction of the important articles from the newspaper. And my sole perspective here is you guys should learn how to extract articles of importance from the newspaper. You guys should understand how to read the newspaper from the perspective of giving solution to the problem which is highlighted in the articles. Okay, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू सो मच इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास. आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में बिना मुझे बताए प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना. आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ यू गाइज आर टेकिंग दीज वीकली न्यूज एनालिसिस सेशंस. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. कीप लर्निंग.